हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6th क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से 3rd चैप्टर के टॉपिक मेंटल मैथ को करेंगे। इसमें गिवन है ऑब्जर्व द फिगर बिलो। नीचे दिए गए फिगर को ऑब्जर्व करो। व्हाट कैन यू से अबाउट द नंबर्स एंड द लाइंस ड्रॉन। आप इस फिगर में गिवन नंबर्स और जो लाइन ड्रॉ की गई है उनके बारे में क्या कह सकते हैं। इस फिगर में देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं और लाइंस को ड्रॉ किया गया है। जैसे हमारा फर्स्ट नंबर है 38,800। इसके साथ जो लाइन ड्रॉ की गई है ये है 13,000, 25,000 एंड 400। 400 से 2 टाइम्स लाइन ड्रॉ की गई है। सो 38,800 ये सम है इन सभी नंबर्स का। मीन्स वी कैन राइट 25,000 plus 13,000 if we will find the sum, this will be equal to 38,000. now if we will add 2 times 400 means 800 और ऐड करेंगे इसमें, तो the sum will be 38,800. so इन सभी नंबर्स का सम है 38,800. सिमिलरली ये नंबर है 28,000. अब इन गिवन नंबर्स से हमें ऐसे नंबर्स चूज़ करने हैं जिनका सम 28,000 हो। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज़ 25,000. अब 25,000 प्लस 3,000 और चाहिए ताकि सम 28,000 रहे। सो उसके लिए वी विल ड्रॉ 2 लाइन्स फ्रॉम 1,500. सो इफ़ वी विल फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज लाइक 25,000 plus 1,500 plus 1,500, then the sum of all these numbers will be 28,000. So in this way we have to draw all these lines. So 28,000 will be the sum of 25,000 and twice of 1,500. Next number is 61,600. सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 60,000 प्लस 4 लाइन्स फ्रॉम 400. सो द सम ऑफ ऑल दीज विल बी 61,600. मीन्स इफ यू विल ऐड 60,000 and 4 times 400, then the sum of all these numbers will be 61,600. Next is 31,000. So for this number we will take 25,000 and 4 times 1,500. So 25,000 plus 4 times 1,500, and if we will find the sum, this will be equal to 31,000. Next number is 63,000. So 60,000 plus twice of 1,500. Next is 19,500 is the sum of 13,000, 3 times 1,500 and 5 times 400. So 19,500 can be obtained by adding 13,000 plus 3 times 1,500 and 5 times 400. So if we will add all these, then this will be equal to 19,500. So for this we will take 13,000 plus 5 times 1,500
and 400. If you will add 13,000 plus 5 times 1500 plus 400, then your sum will be 20,900. So for this we will draw the line like this: 13,000 5 lines from 1500 and 1 line from 400. Numbers in the middle column are added in different ways. मिडल कॉलम्स के जो नंबर हैं उनको अलग अलग वेज से ऐड करके, अलग अलग तरीके से ऐड करके वी गेट द नंबर्स विच आर ऑन द साइड्स. साइड्स में दिए गए नंबर्स को हम बना सकते हैं या वी कैन गेट द नंबर्स विच आर ऑन द साइड्स. द नंबर्स इन द मिडल कैन बी यूज्ड एज मैनी टाइम्स एज नीडेड टू गेट द डिजायर्ड सम. और साइड वाले गिवन नंबर्स को हम बनाने के लिए या फॉर्म करने के लिए हम मिडल में गिवन नंबर्स को बार बार रिपीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड. ड्रॉ एरो फ्रॉम द मिडल टू द नंबर ऑन द साइड्स टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट. और हमें एरोज ड्रॉ करना है मिडल नंबर्स से साइड वाले नंबर्स की तरफ. जैसे एग्जाम्पल, आपको 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन, इट इज़ सिंपलर टू डू इट मेंटली. ये सिंपल है, आप इसको मेंटली भी कर सकते हैं. सो फॉर दिस यू डोंट नीड नोटबुक. सो फर्स्ट number is 38,800. So as we know, this number can be obtained by adding 55,000 plus twice of 400 and plus 13,000. अगर इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो we will get 38,800. Similarly, the next number 3,400 can be obtained by adding 1,500 twice and 400. Can we make 1,000 using the numbers in the middle? क्या मिडल में गिवन नंबर से आप 1,000 बना सकते हो? Why not? क्यों नहीं? What about 14,000, 15,000 and 16,000? 14,000, 15,000 और 16,000 के बारे में आप क्या कहेंगे? Yes, it is possible कि हाँ यह पॉसिबल है. एक्सप्लोर हाउ. एक्सप्लोर करिए कैसे. What 1,000 cannot be made? कौन सा 1,000 है जो आप नहीं बना सकते? So the given numbers are 25,400, 13,000, 1,500 and 60,000. इन नंबर्स को ऐड करके हम थाउजेंड्स को नहीं बना सकते. उसके बाद हम देखते हैं 14,000, 15,000 और 16,000. सो इसके लिए 14,000, to make 14,000 we will use 1,500 8 times plus 5 times 400 and this will be 12,000 plus 2,000 and the sum here will be 14,000. So by using the given numbers we can make 14,000. The next is 15,000. So to make 15,000 we will use the number 13,000 and 5 times 400. So here the sum will be 13,000 plus 2,000 which is equal to 15,000. The next number is 16,000. So to make 16,000 we will use 13,000 plus 2 times 1,500. So here the sum of both will be equal to 13,000 plus 3,000. So it is equal to 16,000. Hence we can obtain 14,000, 15,000 and 16,000 by adding the given numbers.
नेक्स्ट इज एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग. सो इस बार हम गिवन नंबर्स को ऐड करने के साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. हियर यूजिंग द नंबर इन द बॉक्सेस वी आर अलाउड टू यूज बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर. यहाँ गिवन नंबर्स के साथ हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके रिक्वायर्ड नंबर को प्राप्त कर सकते हैं. एज एग्जाम्पल इन एन एग्जाम्पल इज शॉन. एक एग्जाम्पल है, जैसे if we have to get 39,800, so for this we have chosen 40,000 and we have subtracted 800 from it and we have added twice to make this number. So second number is 45,000. So to obtain this number 45,000 we will use 40,000 plus 12,000 and we will subtract 7,000 from it. So if we will find the sum, then it will be 45,000. Next given number is 5,900. For this we will use 7,000 minus 800 minus 300. So the result will be 5,900. Next is 17,500. So to obtain this number we will use 12,000 plus 7,000 minus 1,500. And here the result will be 17,500. Next number is 21,400. So to obtain this number we will use 12,000 plus 7,000 plus 3 times 800. And here the result of all these numbers, the sum of all these numbers will be 21,400. Digits and operations. An example of adding two 5-digit numbers to get another 5-digit number is this. So here two 5-digit numbers are given and if we will add, then again we will get a 5-digit number. So in example of subtracting two 5-digit number to get another 5-digit number is this. So here we have taken two 5-digit numbers and if we will find the difference of both the numbers, that will be again a 5-digit number. So now the time is it's time to figure it out. Write an example for each of the below scenario whenever possible. So the first question is a 5-digit number plus 5-digit number to give a 5-digit number and the sum should be more than 90,250. So for this we can use number 57,843. This is a 5-digit number and if we will add 32,478 in this, then the sum of both the numbers will be 90,321, which is a 5-digit number and more than this given 90,250. So this is one of the example. So you can write another numbers to find the result. Second is 5-digit number plus 3-digit number to give a 6-digit number. So for this we will use the largest number of 5-digit number, which is 99,999, and if we will add 9,999 and if we will find the sum will be this, which is a 6-digit number. So this is one of the example of this type of question. So next is 4-digit plus 4-digit to give a 6-digit sum.
if we will add the largest 4-digit number and again 4-digit number, the sum will be this, which is a 5-digit number. So hence it is not possible. So next is 5-digit plus 5-digit to give a 6-digit sum. So for this we are taking largest 5-digit number and again we are adding the largest 5-digit number to it. Here the sum of both the numbers will be this, which is a 6-digit number. Next question, 5-digit plus 5-digit to give 18,500. So for this we are taking the smallest 5-digit number. Again we are taking the smallest 5-digit number, and if we will find the sum will be 20,000, which is more than this. So this is not possible to get the sum 18,500 by adding two 5-digit numbers. Next is 5-digit plus minus 5-digit to give a difference less than 56,503. So for this we are taking 99,999 and the second number we are taking here 76,543, and if we will find the difference, this will be equal to 23,456, which is less than the given number 56,503. Next, 5-digit minus 3-digit to give a 4-digit difference. So for this, here we are taking the smallest 5-digit number, which is 10,000, and we are subtracting the largest 3-digit number, and if we will find the difference, this will be equal to 9,001, which is a 4-digit number. Next is 5-digit minus 4-digit to give a 4-digit difference. So for this we are taking the smallest 5-digit number and we are subtracting a 4-digit number from this. The number here we have taken is 6,543, and if we will find the difference, then it will be equal to 3,457, which is a 4-digit number. So it is possible. Next is 5-digit minus 5-digit to give a 3-digit difference. So if we are taking the largest 5-digit number, and here from this number we are subtracting another 5-digit number, which is this. So the difference will be 451, which is a 3-digit number. Next part is 5-digit minus 5-digit to give 91,500. So if we will take 99,999, the greatest 5-digit number and the smallest 5-digit number, and if we find the difference, then the difference will be equal to 89,999, which is less than this given number. So it is not possible to obtain this 91,500 from subtracting two 5-digit numbers. Next is, could you find examples for all the cases? If not, think and discuss what could be the reason. Make other such questions and challenge your answer. So we have done all these. So next, second question is always, sometimes, या never. Below are some statements. Think, explore and find out if each of the statement is always true, only sometimes true, or never true. What do you think so? Why do you think so? Write your reasoning and discuss this with your classmates.
सो नीचे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, उनको सोचो, एक्सप्लोर करो और फाइंड आउट करो कि उनमें से जो स्टेटमेंट गिवन है क्या वो ऑलवेज ट्रू होंगी या समटाइम्स ट्रू होंगी या कभी ट्रू नहीं होंगी। और आप ऐसा क्यों सोचते हो, उसके लिए आपको रीज़न देना है और उसको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज़ अ 5 डिजिट नंबर प्लस 5 डिजिट number gives a 5 digit number. So sometimes, for example, if we will take the smallest 5 digit numbers and if we will find the sum, then this sum will be 20,000, which is a 5 digit number. But if we will take the largest 5 digit number, and if we will find the sum will be this, which is not a 5 digit number. This 1,99,998, this is not a 5 digit number. So it is not necessary that we will always get a 5 digit number. So this statement is sometimes true but not always. Second part is 4 digit number plus 2 digit number gives a 4 digit number. So for this we are taking a smallest 4 digit number, and if we will add the largest 2 digit number in it, then we will get a 4 digit number. But if we will take the largest 4 digit number and we will add the largest 2 digit number in it, then we will get a 5 digit number. So again the statement is always not true. It is true only sometimes. Next is 4 digit number plus 2 digit number gives a 6 digit number. So for this we are taking here the largest 4 digit number, and if we will add a 2 digit number in it, then the sum will be this, which is a 5 digit number. So we cannot get a 6 digit number by adding a 4 digit number and a 2 digit number. So this statement will never true. So this will never true. Next is 5 digit number minus 5 digit number give a 5 digit number. So for this we are taking 99,999, a largest 5 digit number, and if we will get the smallest 5 digit number from this, then we will get 89,999, which is a 5 digit number. But if we will take a 5 digit number like this and we will subtract a 5 digit number from it like this, then the result will be 1234. Hence this statement is sometimes true, not always. Next, E part, 5 digit number minus 2 digit number gives a 3 digit number. So for this we are choosing the smallest 5 digit number, and if we will subtract the largest 2 digit number from this, then the result will be 9,901, which is not a 3 digit number. Hence this statement will never true. Thank you. If you like my video, please do like, share and subscribe my channel.